So now we are going to discuss about cytotoxicity, which is another process of second line of defense to uh, prevent the entry of pathogens in our body. So cytotoxicity is a ability of any cell to damage or kill the target cells. Means target cells वो they say it is a ability of any cell or any substance to damage or kill the target cell. Target cells वो होते हैं जो infected cells. Target cells we can say called as infected cells. And this is a protective response. ये एक protective response है against virally infected cells. ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. वायरली इन्फेक्ट मीन्स जो सेल्स वायरस से इन्फेक्ट होते हो, कैंसर टू ट्यूमर सेल्स, कैंसर टू ट्यूमर सेल्स से, एंड ऑल्सो इन्फेक्टेड सेल्स बाय पैथोजेंस, जो पैथोजन से बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हुए हुए हों, वायरस से इन्फेक्टेड हुए हुए हों, और कैंसर इन्फेक्टेड सेल्स से प्रोटेक्ट करता है ये साइटोटॉक्सिसिटी प्रोसेस. This process includes NK cells, which means NK means natural killer cells, and cytotoxic T cells, and these are the part of innate NK cells are the part of innate immunity, and cytotoxic T cells are the part of adaptive immunity. Natural killer cells are the part of innate immunity, where the cytotoxic cytotoxic T cells are the parts of adaptive immunity. Abhi we'll discuss about the NK cells, which means natural killer cells. Natural killer cells, they do not kill. ये किसी पैथोजन या इन्फेक्टेड सेल्स को जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल नहीं करते. दे डू नॉट किल द पैथोजेंस और द बैक्टीरिया और द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स. दे इन्फेक्ट और दे किल द बॉडी सेल्स. Means अगर suppose we have a cell, the cell, suppose this is a cell, this is 3 to 4 cells. So this is the body cells. These are the some of the body cells. These are the some of the body cells, and these are some of the infected cells. These are some of the infected cells. So these are also the body cells, but these are infected, such as cancer cells. So these are the infected cancer cells. So natural killer cells will kill them, will kill these cells, not these cells. The means they kills the body cells which are infected. The body cells which are infected, they will not kill the pathogens or the bacterial cells. And now they are involved in the elimination of virally infected cells and cancer cells. They do not kill, and but they are involved in the elimination. वो eliminate करते हैं जो वायरस से इन्फेक्ट सेल्स होते हैं और कैंसर सेल जो होते हैं उनको एलिमिनेट करता है. और देयर main difference between the natural killer cells and cytotoxic cells. The difference is that cytotoxic cells need to be active by antigen present cells. Cytotoxic cells वो सेल्स हैं जिनको एक्टिवेट होना पड़ता है बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, बट नेचुरल किलर सेल्स, they don't need to be active by antigen presenting cells. They not need to be active by antigen presenting cells. इनको एक्टिव नहीं होना पड़ता. ये इनका एक डिफरेंस है बिटवीन नेचुरल किलर सेल्स एंड द नेचुरल किलर सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स. दैट नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिव नहीं होना पड़ता बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. दैट इज़ वाई इनको एक्टिवेट कोई करने नहीं आता, ये होते ही एक्टिवेट है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल किलर सेल्स. इसीलिए इनको नेचुरल किलर सेल्स का नाम दिया होता है. और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर आल्सो नोन एज द सीरियल किलर्स क्योंकि वो एक्टिवेट होके किल करते हैं. नेचुरल किलर सेल्स फर्स्टली हाउ, अभी हम पढ़ेंगे हाउ दे आर eliminating the infected viral infected cells.
तो फर्स्ट पहले NK cells, natural killer cells, check a conjugate molecule which is MHC1. MHC1, which means major histocompatibility complex 1. Major histocompatibility complex 1 on the surface of cell. On the surface of cell, and it works as an identification card of a cell. जो MHC1, it is a complex, it is a protein, major histocompatibility complex 1. ये हर सेल के सरफेस पे होता है. इट वर्क एज आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑफ द सेल. ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है. इफ एनी सेल डू नॉट हैव or modified cell or any cell which in which MHC1, major histocompatibility complex, is absent, so natural killer cells will damage or kill that cells, will damage or kill the cell. Who the cell, if any cells MHC1, major histocompatibility complex, is absent, natural killer cells will kill those cells. वो उन cells को kill करते हैं, डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं जिनके पास MHC कॉम्प्लेक्स 1, MHC1 एब्सेंट होता है. और दिस इज द वे ऑफ NK सेल्स टू डिटेक्ट और एलिमिनेट सेल्स. ये एक प्रोसेस है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द साइटोटॉक्सिसिटी. हाउ दीज नेचुरल किलर सेल्स आर डिस्ट्रॉइंग द सेल्स बाय identifying the infected cells and non-infected cells. The cells which have major MHC1 are not non-infective, and the cells in which is MHC1 is absent, these are called infected cells. It damages cells by releasing cytotoxic granules. ये cytotoxic granules को release करता है. Natural killer cells release the granules are protein. They release the two protein, दो protein release करते हैं, perforin and granzyme. ये दो protein है जो cytotoxic granules रिलीज करते हैं, जो नेचुरल किलर सेल्स रिलीज करते हैं. इनको कहते हैं साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स. परफोरिन प्रोटीन एंड ग्रेंजाइम, ये दो साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं जो डैमेज करते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेकिंग पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दीज ग्रेन्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग pores in plasma membrane of the target cell and cause it lysis. पढ़ा था कि साइटोटॉक्सिसिटी इज अ प्रोसेस जो इन्फेक्ट करता है टारगेट सेल पे. अभी नेचुरल किलर सेल्स कैसे टारगेट सेल्स, किस सेल्स को कर रहा है जो टारगेट सेल्स है? द सेल्स विच डू नॉट हैव MHC1 कॉम्प्लेक्स आर द टारगेट सेल्स फॉर नेचुरल किलर सेल्स, एंड ये रिलीज करते हैं दो प्रोटीन, परफोरिन प्रोटीन एंड ग्रेंजाइम. these granules make the pores in plasma membrane of target cell and cause its lysis. So इस तरह the natural killer cells infect करते हैं, infect नहीं, these natural killer cells are preventing our body from diseases, from pathogens. And next cells we have cytotoxic T cells. So cytotoxic T cells भी एक lymphocytes हैं. It's a lymphocyte family of all white blood cells. ये भी एक white blood cell है. These cytotoxic T cells recognize infected cells. ये recognize करते हैं infected cells को. These are formed in bone marrow but matured in thymus. Cytotoxic T cells are formed in bone marrow. ये इनकी बनते bone marrow में है, but they matured in thymus. Rather, natural killer cells are originated in bone marrow and matured in bone marrow also. बनते भी वही हैं और मैच्योर भी वही होते, बट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बोन मेरो में बनते बट मैच्योर होते हैं थाइमस में. एंड वन मोर थिंग मैंने बताई, जो दे साइटोटॉक्सिक सेल्स नीड एक्टिवेशन, नीड टू बी एक्टिव बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट करते हैं टू रिलीज एंटीबॉडीज और टू वर्क अगेंस्ट द पैथोजेंस. ओके, so these recognize infected cells
फॉर्म इन बोन मेरो एंड मैच्योर इन थाइमस. ड्यूरिंग मैचुरेशन के दौरान नाइव टी सेल्स डेवलप CD8 को रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर. मैचुरेशन के दौरान नाइव टी सेल्स जो होते हैं, नाइव टी सेल्स, वो बनाते हैं CD8 को रिसेप्टर एंड TC रिसेप्टर, जो हम इनको कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. मैचुरेशन के दौरान ये बनाते हैं CD8 को रिसेप्टर एंड टी रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर. These both CD8 and TCR, T cell receptor, cytotoxic cells bind by the help of CD8 and TCR. Cytotoxic cells bind with MHC1. इन दोनों की मदद से these cytotoxic cells are binds with MHC1. इन दोनों की मदद से साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं, वो अटैच होते हैं MHC1 से, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स से अटैच होते हैं, विच इज़ present on surface of all nucleated cells. MHC उन सेल्स के सरफेस पे होता है. all nucleated cells, जिन सेल्स के बाद न्यूक्लियस होता है, मीन्स all eukaryotic cells have MHC1 MHC complex 1. T cells immediately